Hello students and welcome to today's geology class. तो previous class में हमें discuss करते about the tools, different tools of the recombinant DNA technology or genetic engineering. तो हमें दुईटा tool already discuss करी सारलानो. First tool टा थिला enzymes, second tool टा थिला the cloning vectors, different type of cloning vectors मान को विषय हमें discuss करथिला. तो 3 नंबर टूल टा हैला competent host. ना competent host माने हैला normally can see be cell foreign DNA के absorb नहीं करे, it does not absorb a foreign DNA. तो हमको काना करवाए पड़सी different techniques use करी करी से सेल मान को हमको ଟିକେ competent बनावे पड़सी. competent माने हैला जेन माने foreign DNA absorb करी पारबे, सेंता सेल के competent cell हुआ है से. तो सेंता ଗୋଟେ competent host बनावा लगे हमें टेक्निक टा डेवलप करिछु. ओके. So let us see what this competent host is and how we can make a cell competent. So the bacterial cell, they need to be made competent to uptake foreign DNA. Generally can say bacterial cell foreign DNA absorb नहीं करे ताके हमको ready करवा पड़वा कि से foreign DNA absorb करी पारवा. That process is of making a competent cell. That is the process of making a competent cell so that it can uptake foreign DNA. तो এটা बहुत different way रे achieve हेसी. गुटे method हला. It is achieved by treating the cells with specific concentration of bivalent ions, that is a calcium ion, which increase the permeability. तो every cell membrane has its own permeability. आमे जानी जो cell membrane टा semi permeable है, से सबु molecule के allow नहीं करे cell भीतर के आसवार लगी. तो सतार जन permeability हो जो सता के बढ़े हेसी. We can increase the permeability by use of bivalent ions like calcium ion. तो कैल्शियम आयन जिते पहले आमे कैंसी बैक्टीरियल सेल के एक्सपोज कर देसु तो से काना हेसी तार परमिएबिलिटी टा बढ़ी जैसी और से फॉरेन डीएनए के भी एब्जॉर्ब कर दबा जेंटा जनरली नॉर्मल कंडीशन रे से एब्जॉर्ब नहीं करे. और देयर इज अनदर मेथड. डीएनए इज फोर्स्ड इनटू द होस्ट by first incubating cells on ice followed by heat shock briefly at 42 degree centigrade and then putting it at low temperature again. तो इनो काना करा हेसी आमे सेल मन को पहला आइस रे रखी दमा तापरे सडनली ता टेम्परेचर के बढ़े दमा 42 डिग्रीज के जाके हमें हीट शॉक कहूछु. फिर सडनली से मन को गोटे लो टेम्परेचर रे रखी दमा. तो एज ए रिजल्ट जन सडन टेम्परेचर चेंज हेसी इ माने एजिटेटेड हे जसन सेल माने एजिटेटेड हे जिवे आ से माने फॉरेन मॉलिक्यूल मन को एब्जॉर्ब करी पकाबे. दे एब्जॉर्ब द फॉरेन डीएनए. नाउ दिस इज हाउ द मेथड इज कैरिड आउट. First add the cells in ice, keep it for 30 minutes, incubate it for 30 minutes, then suddenly put them in 42 degree centigrade heat shock for 1 minute, then again slowly bring down the temperature. फिर कहता है temperature low temperature के धोरियास होता है. As a result, these cells will absorb the foreign DNA. Okay, so these are the two common methods. Gutella by use of bivalent ions, that's the calcium ion, and by the heat shock. Besides that, also there are different methods by which we can introduce the foreign DNA into the host cell. ସେଥିରୁ ପହଲା method ଟା ହେଲା micro injection method. Micro injection, as the name suggests, it is a छोट injection. It's a very small injection or syringe like structure by the help of which you can insert the recombinant DNA into the host cell. The recombinant DNA is directly injected into the nucleus of a host cell by help of micro syringe. Now this is how the process is carried out. तो एनो देखि पारु छ गुटे सेल अछि. तो सेल रो न्यूक्लियस भितरे एटा हला सेल, एटा हला न्यूक्लियस. तार न्यूक्लियस भितरे हमें इंजेक्शन रे डायरेक्टली डीएनए के इंजेक्ट कर दमा. ओके, तो एटा माइक्रोस्कोप तले रखी करा हेसी सो दैट यू कैन सी द सेल, यू कैन कैरी आउट द प्रोसेस. तो ये टेक्निक के कहा जायसी माइक्रो इंजेक्शन. डायरेक्टली इंजेक्ट द फॉरेन डीएनए इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल. सेकंड मेथड टा हला बायोलिस्टिक. बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड, as the name suggests. ना देखो जीन गन को उचू. गन काना, गन is an instrument which is used to fire bullets. अपन गुलिया ना सब फायर करवार लगी आमे माने गन यूज करछु. इनो भी अंदर फायरिंग करायसी बट इनो गुली फायरिंग नहीं करू. आमे सतार जगह रे गोल्ड आउट टंगस्टन पार्टिकल कोटेड विथ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. माने गोल्ड आउट टंगस्टन पार्टिकल सतार चारिडा हम डिजायर्ड डीएनए के कोट कर दमा और सता के हमें फायर करमा इनटू ए लिविंग सेल. तो सेतले इदाके बायोलिस्टिक भी कहैसी. बायो माने हला लिविंग और बैलिस्टिक माने एनीथिंग व्हिच कैन बी फायर्ड. कैन जिनिस जेटा हम फायर करि पारमा सेता के बैलिस्टिक कहसु हमें. ठीक अछि. तो generally carried out in plant cell where the cell are bombarded with
high velocity recombinant DNA coated with gold or tungsten particles. तो हाई वेलोसिटी गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल मन को फायर कराइसी बॉम्बार्ड कराइसी ऑन ए प्लांट सेल एंड दे आर कोटेड विथ द डिजायर्ड डीएनए तो इनो गुटे जिनिस मार्क करबो स्टूडेंट्स बुलेट मानकर जगह में गोल्ड की टंगस्टन पार्टिकल यूज करछु जहार चारिहेडा में डीएनए के कोट कर देछो तो से जेन पार्टिकल्स ने तले सेल भीतर के पसबे से डीएनए टा एब्जॉर्ब हिजबा बाय द सेल इटसेल्फ ठीक अछि तो इनो गोल्ड की टंगस्टन यूज करवार मेन रीजन हला देखो अलगा किसी मेटल भी हमें यूज करि पारता जिनटा बहुत सस्ता थिसी व्हिच इज वेरी मच चीप बट गोल्ड एंड टंगस्टन आर कॉस्टली मटेरियल बट स्टिल हमें गोल्ड की टंगस्टन पार्टिकल यूज करसु तार मेन रीजन हला कि गोल्ड और टंगस्टन जनरली कैन बी सेल रो फिजियोलॉजिकल फंक्शन मान को हैम्पर नहीं करन दे विल नॉट रिएक्ट विथ द फिजियोलॉजी ऑफ द सेल सेथि लई गोल्ड की टंगस्टन पार्टिकल यूज कराइसी दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर जॉन स्टैनफोर्ड तो जॉन स्टैनफोर्ड प्रोफेसर जॉन स्टैनफोर्ड से फर्स्ट टाइम लगी टेक्निक टा डेवलप करथिले ना दिस इज द मेथड तो इनो देखि पारथो इनो से गन लाइक मैकेनिज्म टे अछि गुटे इक्विपमेंट अछि जहार भितरे हमें गोल्ड की टंगस्टन पार्टिकल भरि थिसु कोटेड विथ डीएनए सेता के फायर कर दिसु इनटू द प्लांट्स डायरेक्टली तो एटा जतले हाई वेलोसिटी रे फायर करबो तो सेटा प्लांट सेल भीतर के ढुकी जबा आ सेनो सेटा एब्जॉर्ब हि जबा नेक्स्ट मेथड टा हला वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसफर वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसफर एटा हमें ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कस करि सालानो क्लोनिंग वेक्टर्स रे तो सेथरे काना हेसी हमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर यूज करी करी भी हमें हमर फॉरेन जीन के कैनसी भी होस्ट सेल भितर इंट्रोड्यूस करि पारमा प्लांट सेल भितर इंट्रोड्यूस करबा लागि टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम यूज करूछु एनिमल सेल भितर ट्रांसफर करबा लागि रेट्रोवायरस यूज करछु तो रेट्रोवायरस रे जदी हमें हमर डीएनए टा यूज इंसर्ट कर दमा तो रेट्रोवायरस जेतेबेले एनिमल सेल के इफेक्ट करछे तो सता के से ट्रांसफर कर दवा so that is the use of disarmed pathogen vectors to infect cell and transfer the recombinant DNA into the host cell तो प्लांट सेल रे करबा लगी टीआई प्लाज्मिड ऑफ एक्टोबैक्टीरियम यूज करायसी एनिमल सेल रे ट्रांसफर करबा लगी हमें रेट्रोवायरस यूज करसु लास्ट मेथड टा हला इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड इलेक्ट्रोपोरेशन नारु जणा पडुछे इलेक्ट्रोपोरेशन ना इलेक्ट्रिक करंट दिया हेसी आ सेटा पोर फॉर्मेशन करसे ना छोट छोट होल्स बने देसी so when little mild electric current along with calcium chloride is used to cause temporary pores on the cell membrane to uptake foreign DNA तो जिते बेले हमें कैल्शियम क्लोराइड संगे टिके इलेक्ट्रिक शॉक दे दमा सेल मान को तो सेल मेम्ब्रेन रे छोट छोट कोणा माने ही जैसी because of this electric shock there will be small holes created on the plasma membrane or the cell membrane तो जितले छोट छोट कोणा माने ही जैसी से थ्रू फॉरेन डीएनए टा सेल भीतर के इंट्रोड्यूस ही जवा that method is called as electroporation तो एटा से इंस्ट्रूमेंट है जेंथरे इलेक्ट्रोपोरेशन करायसी sorry students so these are the different methods by which you can introduce a recombinant DNA or a foreign DNA into a host cell तो एटा हला तीनटा टूल जेनेटिक इंजीनियरिंग रो पहला टूल टा हमें देखितला एंजाइम्स सेकंड टूल हला क्लोनिंग वेक्टर और तीन नंबर टूल टा याद जेंटा हमें डिस्कस कला सेटा हला कॉम्पिटेंट होस्ट तो ये तीन ही टूल यूज करी करी हमें केनता करी रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएट करमा सेटा पढमा नेक्स्ट क्लास रे so in the next class we will move on to the process of our DNA technology thank you everyone